आप महाराष्ट्र में आपने सरकारें बदल दी लोगों को खरीद के, जिनके खिलाफ ईडी के केस चल रहे थे उनको आपने कैबिनेट में ले लिया। ये केवल महाराष्ट्र में नहीं हुआ, आपने उत्तराखंड में सरकार बदल दी, इलेक्टेड सरकार आपने मध्य प्रदेश में बदल दी, आपने कर्नाटका में बदल दी, आपने अरुणाचल प्रदेश में बदल दी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया हर केस में कि ये गलत हो रहा है। तो आप कहते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास इतना ज़्यादा धन है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जो हिंदुस्तान से सब रिच पार्टी, हिंदुस्तान की सब दुनिया में सब द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड इज़ द बीजेपी through the electoral bond. I will let the BJP answer that. I am not here to defend the BJP. Neither am I here to defend the Congress. So but you fight the battles of the India Alliance, and which is why I fight the battles of the citizen of this country. No, legal battles. The citizen of this country. Never, even my legal battles are based on what the citizen, what should happen in this country. When you make an accusation, so that is why I'm asking you, is like, for example, when you talk about the various state governments having been dismissed or having been turned over. No, not dismissed. This is different from dismissing a state government. Which is, for example, Congress party. One second. Congress party dismissed government some time back. You know when they dismissed, and Supreme Court struck it down. Acceptable. No, this is a case of elected governments being toppled over, never in the history of this country, by buying, any number of people to ensure that they are reduced to a minority. Did anybody go to court that they have been bought over? When they went to court, they lost the case. So are you saying when Maharashtra went to court, when they went to court, they lost the case? So you think, let me now. So if the court have already one said. second. Court is so not, then you don't believe court the is court. not dealing with the issue of buying over. Yeah, so then. Right. I am telling you the reality on the ground. If you disagree with me, say so. That they were not bought over. This is just altruism that people just came and said कि यार हाँ बीजेपी इतनी बढ़िया पार्टी हम गला लगाना चाहते हैं। मोदी जी ने बयान दिया कि 720 मिलियन और whatever का इतना घोटाला हुआ और ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी शख्स को आपने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। आप कहते हैं नहीं ये तो कितने, मतलब कि कुछ लोगों को लगा कि बीजेपी इतनी गजब की पार्टी है, इतना लगाव है हमसे कि हम तो उनके गले लगना चाहते हैं। गजब की पार्टी कौन सी है फिर? मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। पूछ रही हूँ कि कौन सी पार्टी? देखो मैं आपको एक सच बात बताऊँ, हिंदुस्तान में you need a change of the political system. This political system is not going to deliver for the people of this country. Click here to watch the previous episodes.